Hello guys, I am Shubham from Show Tutorials. In this video, we will see chloroplast protein transport, okay, or protein targeting. Means protein कैसे chloroplast में आते हैं. Okay, this is the part 2 of the video. Part 1 में हमने chloroplast का organization देखा है, right? So before we start, subscribe to our channel and press the bell icon to get notified whenever new video go. This is absolutely free from your side, but it will help us grow. So as we saw in the first video, chloroplast, there are different compartments, okay, outer membrane, inner membrane, intermembrane space, stroma, which is similar to matrix space, thylakoid membrane and thylakoid space. Okay, if you want to see functions of each compartment, watch the previous video. अगर आपको डिटेल में हर एक कंपार्टमेंट का फंक्शन स्टडी करना है तो पार्ट 1 वीडियो को जरूर देखिए. This is about transport of proteins into the chloroplast. So this is very similar to the mitochondria. माइटोकॉन्ड्रिया में जैसे प्रोटीन ट्रांसपोर्ट होता है वैसे ही क्लोरोप्लास्ट में होता है. यू कैन सी यहाँ पे टिक टॉक ऐसे प्रोटीन है, टिक टॉक, यू कैन रिमेम्बर लाइक दिस. माइटोकॉन्ड्रिया में टीम टॉम ऐसे होते हैं. इन क्लोरोप्लास्ट टिक टॉक, दैट इज ट्रांसलोकेज ऑफ इनर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट एंड ट्रांसलोकेज ऑफ आउटर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट ऐसे. तो यू कैन सी यहाँ पे एक प्रोटीन है, थैलाकॉइड प्रीकर्सर प्रोटीन, राइट. मतलब इसका जो टारगेट लोकेशन है दैट इज थैलाकॉइड, मीन्स इट इज डेस्टाइन्ड टू गो इनसाइड थाइलाकॉइड. इट इज टारगेटेड टुवर्ड्स थैलाकॉइड. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो ये सीक्वेंस है, सी यहाँ पे 2 कलर्स दिख रहे हैं हमें. एक रेड कलर का है एंड दूसरा ब्राउनिश कलर है. तो फर्स्ट जो रेड है दैट इज क्लोरोप्लास्ट सिग्नल सीक्वेंस. ओके, क्लोरोप्लास्ट सिग्नल सीक्वेंस मीन्स दिस सिग्नल सीक्वेंस is specifically to go inside the chloroplast, right? And उसके पीछे thylakoid signal sequence, right? First chloroplast का sequence है and then thylakoid का sequence है. So as we know that term complex में receptor होता है and channel forming, right? So same here with talk में भी receptor है, right? उस receptor पे chloroplast signal sequence first bind होगा. So this red one gets binds first and then this will allow the entry inside the outer membrane. You can see here. Okay, इसको allow किया receptor में bind होने के बाद. Then this stick complex also comes closer. You can see this stick complex and talk complex. They come near to each other, right? See, they have come closer to each other and the protein will go inside. Okay, मीन्स ये आउटर मेम्ब्रेन को भी क्रॉस करेगी एज वेल एज इनर मेम्ब्रेन को भी क्रॉस करेगी, राइट. एंड आफ्टर इट कम्स इनसाइड द स्ट्रोमा द क्लोरोप्लास्ट सिग्नल सीक्वेंस इज क्लीव्ड. हियर क्लीवेज ऑफ क्लोरोप्लास्ट सिग्नल सीक्वेंस जो रेड कलर का है दैट इज क्लीव्ड डाउन, क्लीवेज हुआ. देन ओनली द थाइलाकॉइड सीक्वेंस इज रिमेनिंग व्हिच इज एक्सपोज्ड नाउ. ओके, एक्सपोज मतलब ये अभी हाईलाइट हो रहा है, राइट. व्हेन द क्लोरोप्लास्ट सिग्नल इज प्रेजेंट इट इज नॉट एक्सपोज और इट इज लाइक हिडन, मतलब छुपा हुआ है वो थैलाकॉइड सीक्वेंस. सिर्फ क्लोरोप्लास्ट में जाना है इसको पता है. व्हेन द thylakoid sequence is exposed then it will go inside the thylakoid. Okay, thylakoid. And when it comes to the thylakoid you can see here again this signal sequence is cleaved. Protein and the sequence is separated. Okay, मतलब एक mature protein and thylakoid sequence gets separated, right? So basically 3 routes है. There are 3 routes
to go inside the thylakoid. Okay, you can see here 3 routes to translocate protein into thylakoid space, and GTP or ATP dependent translocation into stroma. Means what? Stalk and thick complex से जब protein अंदर आते हैं, when the protein comes inside through this thick stalk complex, GTP or ATP dependent process takes place. Means proteins need help of ATP or ATP hydrolysis, right? प्रोटीन को ATP की मदद से या फिर ATP की मदद से अंदर खींचा जाता है, right? So this is the energy dependent process. Okay, got it? This was the A picture. Let's see about B picture. B picture में डिटेल में बताया है थाइलाकॉइड का ट्रांसपोर्ट. Basically 3 routes. Okay, 3 routes are there to protein going inside the thylakoid. So first route is the SEC pathway. Okay, SEC pathway. You can see this is ATP plus H plus electrochemical gradient. Right, means it uses ATP. ATP को भी use करता है as well as H plus hydrogen का electrochemical gradient होता है. Right. So about H plus electrochemical gradient, I will tell you. जो H plus electrochemical gradient है, माइटोकॉन्ड्रिया में it is present the inner membrane, right? Inner membrane, but this is absent in the chloroplast. Okay, inner membrane में ये absent होता है of the chloroplast. Thus, for the inner membrane transport, ATP or ATP dependent translocation takes place. Because यहाँ पे H plus electrochemical gradient absent है, right? This is absent, and that gradient is present in thylakoid. Okay, thylakoid में gradient present, H plus electrochemical gradient. Why? Because thylakoid synthesizes the ATP, right? As well as it is the center of photosynthetic reaction, right? So thus, electrochemical gradient is present in thylakoid. And we also have seen this in the previous video that thylakoid is basically form thylakoid membrane. जो बनी है that is of inner membrane only, right? So thus the first pathway is SEC pathway dependent on H plus electrochemical gradient and ATP, right? Second is OXA pathway, OXA. Now this OXA is present in mitochondria. So this is OXA-like pathway, means the protein that is similar to OXA of mitochondria. So this OXA-like pathway uses GTP, GTP hydrolysis use करता है and H plus electrochemical gradient also. One more protein that is involved is the SRP homologue. Okay, SRP homologue basically this is chloroplast specific SRP. Okay, chloroplast SRP भी बोल सकते हैं. This is signal recognition particle. Means this will recognize the signal here. Signal को recognize करेगा and then it will bind to it. Okay, then the protein will come inside. Basically this is the membrane protein. You can see here. And जो third route है that is TAT pathway. TAT pathway. Okay, TAT pathway. TAT pathway means twin arginine. Twin arginine translocation. Okay, twin arginine means what? 2A. Okay, A stands for arginine, but it is known as RR. Okay, RR. That uses electrochemical gradient. Okay, so these are the 3 routes. One more thing you have to remember that SRP, which is specific for the chloroplast, this lack the RNA subunit or RNA component. This is important. Okay, signal recognition particle that is specific for chloroplast,
that lacks RNA component, means RNA component is absent in this specific SRP. Now ये तो बेसिक है, अभी हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे with one more picture what are the things you have to know. Okay, before I start this I will tell you one more thing which is important. Chloroplast stroma contains most of the proteins involved in Calvin cycle. Okay, Calvin cycle मतलब Calvin cycle के प्रोटीन्स स्ट्रोमा में प्रेजेंट होते हैं, राइट. दैट फंक्शन फॉर CO2 कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन. ओके, फिक्सेशन. वन मोर थिंग, रूबिस्को एक एंजाइम है, राइबोलोज बिस फॉस्फेट कार्बोक्सिलेज. ओके, राइबोलोज बिस फॉस्फेट कार्बोक्सिलेज. दिस एंजाइम हैज large subunit and small subunit. Okay, large subunit, small subunit. Large subunit is coded by chloroplast DNA. Small subunit is coded by nuclear DNA. This is the important thing you have to know. Okay, लास्ट सबयूनिट को क्लोरोप्लास्ट डीएनए ही कोड करता है. एज वी नो दैट माइटोकॉन्ड्रिया का ऐसा खुद का जेनोम है, राइट. एज माइटोकॉन्ड्रिया हैज इट्स ओन जेनोम, क्लोरोप्लास्ट आल्सो हैज इट्स ओन जेनोम, मींस डीएनए जेनेटिक मटेरियल खुद का है. सो दैट डीएनए कोड्स फॉर लास्ट सबयूनिट ऑफ रूबिस्को, बट स्मॉल सबयूनिट इज कोडेड बाय न्यूक्लियर डीएनए. मींस इसका जो सिंथेसिस होगा वो साइटोसोल में होगा या साइटोप्लाज्म में होगा, एंड देन इट विल गेट ट्रांसपोर्टेड टू द स्ट्रोमा बाय सिग्नल, राइट, एज वी saw now. This is a detailed picture in which you will see more specific how the protein gets transported into the chloroplast. See, two proteins है. फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे लेफ्ट साइड पे प्लास्टोसाइनिन प्रीकर्सर and right side metal binding precursor protein. Okay, so you can see there are two sequences, and terminal stromal import sequence and के पीछे thylakoid targeting sequence. Same like previous हमने देखा है. First it goes to stroma from the stalk and teeth. Okay, so first this N-terminal stroma sequence will bind to a receptor complex of stalk. Okay, I will write here stalk complex receptor and channel forming. In receptor, that is stalk 159, channel forming stalk 75. Receptor also contains stalk 34. Okay, you can see first signal sequence bind to receptor component, and then it gets permission to pass to the channel forming component. मतलब पहले ये परमिशन लेगा रिसेप्टर से अंदर घुसने के लिए, देन चैनल से ये एंटर करेगा. कैन सी हियर एज आई टोल्ड टिक कॉम्प्लेक्स भी यहाँ पे
नजदीक आता है फिर दे कम क्लोज टू ईच अदर. ओके, नाउ सेम एज माइटोकॉन्ड्रिया में जैसे हमने देखा HSP70 plays a role to take the protein inside. Okay, HSP70 प्रोटीन को अनफोल्डेड स्टेट में रखने में हेल्प करते हैं, राइट. प्रोटीन्स इन अनफोल्डेड स्टेट इज pulled inside, right. HSP70. What is the function of HSP70? Protein in unfolded state is pulled inside, whether it may be mitochondria or chloroplast. You can see दोनों साइड सेम चल रहा है यहाँ तक. So I will not explain and not take much time. यहाँ पे भी सेम 2 सीक्वेंस है, राइट. सेम सीक्वेंस. मेटल बाइंडिंग प्रिकर्सर है. दिस इज अ मेटल बाइंडिंग प्रोटीन and this is a plastocyanin. Okay, I will tell the distinguishing factors. I will explain. Now start the main thing. प्लास्टोसाइनिन में स्ट्रोमा का सीक्वेंस अभी क्ल्यू हुआ. स्ट्रोमल सीक्वेंस गेट्स क्ल्यूड. बेसिकली हु क्ल्यूज? एंजाइम नोन एज पेप्टिडेज. के पेप्टिडेज सिग्नल सीक्वेंस को क्ल्यू करेगा, राइट. दिस इज क्ल्यूड. नाउ दिस गेट्स एक्सपोज. हैलाकॉइड वाला एक्सपोज होगा. क्लोरोप्लास्ट SRP gets bound. Okay, chloroplast SRP will recognize the signal, bind to it and help the protein transport. You can see यहाँ पे chloroplast SRP receptor भी है. Okay, chloroplast SRP receptor is present and the protein comes inside. Protein अंदर आने के बाद thylakoid sequence क्ल्यू होगा, right, and the mature protein is separated. So this is a specific example of plastocyanin, right. You can remember this is the pathway. This uses a SRP. You have to remember SRP dependent pathway. So here comes the SRP receptor, right. SRP receptor को आके chloroplast SRP with the protein come and bind, right, and then only it can enter. After entering, halocoid sequence is cleaved and mature plastocyanin is separated. Now in the case of metal binding precursor protein, what happens? First again stroma sequence is cleaved, right, and this is thylakoid sequence. Now this is metal binding protein. Okay, this precursor is converted to protein now. Okay, same here, when the stromal sequence is cleaved, it is converted to mature protein. Okay, sorry, the mature protein will be formed when it is goes completely inside. Here mature metal binding protein when it is going inside completely, मतलब कंप्लीट अंदर जाने के बाद ही उसको हम मैच्योर बोल सकते हैं, पहले नहीं बोल सकते. पहले यहाँ पे प्रिकर्सर लिखा है, स्टार्टिंग में जब है तो प्रिकर्सर दोनों अंदर एक क्लीव होने के बाद प्रोटीन एंड प्लास्टोसाइनिन के एंड पूरा अंदर जाने के बाद मैच्योर, राइट, मैच्योर. So this metal binding protein takes the use of pH dependent pathway. Okay, H plus electrochemical gradient जो हमने देखा, right, pH dependent pathway it will be using, and as well as यहाँ पे 2 R's है. See, 2 R's. This is TAT. Okay, TAT, queen arginine translocation, means these 2 arginines in the protein are the signal, right? They will act as a signal basically. Okay, so after this is cleaved, स्ट्रोमा सीक्वेंस जब क्लीव होगा, दिस आर आर एक्सपोज. ओके, आर एक्सपोज होगा and then these are now bound to metal also, right, red color components are metal.
Okay, so it gets bind to metal also, and then we saw जो टैट है उसमें प्रोटीन H प्लस इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट से अंदर आती है। ट्वीन आर्जिनिन ट्रांसलोकेज हम बोल सकते हैं, इट विल रिकॉग्नाइज दिस ट्वीन आर्जिनिन, then it will take inside. After it comes inside, this sequence gets cleaved, okay, cleaved thylakoid targeting sequence, and mature protein is separated. So this is how protein enters inside the thylakoid, right? So this thylakoid protein कैसे target होता है, that you have to know specifically. Okay, they have not shown in this picture. Chalk and tick complex requires ATP GTP hydrolysis, right? ATP GTP dependent process है to take the protein inside through chalk and tick. HSP70 तो है ही, इसके साथ साथ 2 HSPs are there which play role. I will write here HSP70, HSP90 and HSP93. Okay, these all are basically ATPases. Okay, ATPases, chaperones, right? Chaperones. Now HSP70 जो है, this is for unfolded state. Okay, unfolded state में प्रोटीन को अंदर लेता है, right? As I said previously, it takes the protein inside or pulls the protein in the unfolded state, and HSP90 and 93, these are involved in protein folding after the transport, right? Protein folding में रोल है HSP90 and HSP93 का when the transport is completed. Okay, now one more thing you have to know, HSP93 is also known as triple A plus ATPase. Okay, triple A plus ATPase. Also, this is a ring former. Ring former means it forms a structure like a ring. Ring जैसा structure form करता है. So thus it is known as ring former and triple A plus ATPase. So this is how protein targeting or protein transport in the chloroplast takes place. That's it for this video. I hope this video helps you. If you find this video helpful, do let us know in the comment section. Like this video, share this video with your friends, subscribe to the channel, and stay tuned for the coming videos. Thank you.